So starting with a very basic thing, which is the types of chemical bonds that you have. We'll just go through them very quickly, and then we'll take a deep dive into covalent bonding. So types of chemical bonds. Now the first type is are your ionic bonds. I mean, basically, those are the two main types. You've got ionic and you've got covalent. Now, this is where bonding starts. Bonding is basically nothing more than a sharing of electrons, or somebody losing electrons, another one gaining electrons. So it's basically atoms trying to fight, the atoms that are fighting over electrons. So you've got this periodic table, and in this periodic table, you have got lots of atoms. Somewhere around boron, there's a staircase around boron, and you can follow that staircase. What happens is that on the right side of that staircase, most of the elements are classified as they are classified as non-metals. So these over here are your non-metals, and the ones on the left side are classified usually as your metals. The thing with metals is that they really like to lose electrons. And they like to form positive ions. The thing with non-metals is that they like to gain electrons. So they've got this greater tendency to actually gain electrons, and they like to form negative ions. Now, it's not an abrupt change. What happens is that there's this gradual trend that happens when you move to the right, or when you move to the top of the periodic table. This gradual trend is known as your electronegativity of the atom. So when you move to the right or to the top, the electronegativity of the atom continues to increase. So the electronegativity of atom, it increases. Now, electronegativity is basically the tendency for an atom to gain. I mean, the technical definition is that it's the tendency for an atom to gain a shared pair of electrons. In other Sir, words, Haji. sir, electronegativity across the period? हाँ मतलब right side पे जाओगे ना तो it increases to the right and it increases to the top, which means ये जो corner है ना, that's the most electronegative. Those are the most electronegative elements. So electronegativity increases, and what happens? What is electronegativity? It's the tendency for an atom to gain a shared pair of electrons. Shared pair of electrons. That's what electronegativity is. The question is, why does it increase to the right? The reason it increases to the right is that when you move to the right, the number of protons, they continuously increase and the shells remain the same. So elements that are on the right side, they have more protons. They have more protons and they're also smaller in size relatively. So when you move to the right, you have more protons and a smaller radius, smaller atomic radius. So there's a stronger attraction for electrons. Okay, so as you continuously move to the right, like if you have an element that's on the extreme left, like which element? Let's say you have lithium, which has just 3 protons, and on the extreme right, there is fluorine, which has a total of 9 protons. So they have so lithium and fluorine almost have the same size. I mean, they have the same number of shells. This is 2, 1, this is 2, 2, 7.
but 9 protons has a much stronger attraction for electrons. 3 protons is not going to attract electrons very strongly. So that is one reason why the tendency to gain electrons to the right increases. And why does it increase to the as you move to the top? It increases to the top because at the top you have smaller atoms. When you have smaller atoms, you've got less shielded nuclei. So the nucleus is not surrounded by a lot of electrons. So the nucleus is able to better attract electrons from other atoms. So there's a less shielded nuclei, which leads to more attraction. Sir, हाँ और ये at top of groups की बात करें ना? हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, top the group. जैसा ये है ना, iodine है ना. अगर if I have the iodine atom and पता नहीं atom का क्या. अच्छा, तो बड़े atoms होते हैं ना, उनके पास पहले ही इतने electrons होते हैं, उनका the nucleus is so shielded that वो बाहर से electrons, बाहर के electron को they can't really, मतलब if this iodine nucleus will not be able to attract electrons from other atoms. Why? Because it's already has too many electrons. It has 53 electrons. So the nucleus is completely covered by electrons already. So bigger atoms, they're not that interested in other atoms' electrons because they're already very shielded. अच्छा, यहीं पे अगर फ्लोरीन का एटम होगा ना, तो अच्छा, the fluorine atom is a really tiny atom. तो उसका जो nucleus है ना, it's not surrounded by electrons, so the nucleus is better able to attract electrons. Is this clear? ये clear है बात? Yes, sir. अच्छा, that's the first thing. कि electronegativity increases to the right. Now the next thing is this leads to two types. हाँ जी. सर, आपने जो मोल्स के कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चंस करवाए थे, लाइक फ्राइडे पर जो आपने किए थे, हाँ. सर वो आप फिर कभी अपलोड कर सकते हैं? नहीं, उनके वीडियोस या नहीं, वो तो अपलोड हो जाएगी मेरे ख्याल से. मैं शेयर भी कर देता हूँ लिंक. मेरे ख्याल दुआ ने भी मांगे थे लिंक्स. I'll share it. वो उस पे देखा करो. It usually gets uploaded on YouTube like within Monday. लेकिन वो मैं कर देता हूँ, ठीक है. मैं खुद कोविड की वजह से ना थोड़ा वो हुआ हुआ था डाउन. वो मैं कर देता हूँ, ठीक है. वो लास्ट वीडियो में देखता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ उसे. अच्छा चलो यहाँ से स्टार्ट करो कि अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ताल्लुक है इससे ना. So what it does is it leads to two types of chemical bonds. ठीक है. One is ionic, the other one is covalent. ठीक है. So that's the logic behind, like if you have an ionic bond. Now what's an ionic bond? When is an ionic bond formed? An ionic bond is formed when there's a very large difference in electronegativity. And one of the atoms is trying to pull the electron very, very strongly, the other one is not. So when you have a very large difference, in electronegativity. So here's an example. Let's talk about lithium and fluorine. Now lithium had just it just had two shells. Fluorine also had two shells. So both atoms, they kind of had the same number of shells. This is lithium, this one is. So this one is fluorine. So anyways, so lithium has a total of 3 protons. Remember, lithium is in group 1. It's got very less electronegativity. Fluorine has 9 protons. So 9 protons are obviously going to have a very strong attraction for electrons. Lithium just has 3 electrons in total. Fluorine, on the other hand, has 2 plus 7 electrons. Now, for chemical bonding to happen, there must be space available in the outer shell. I mean, if fluorine
needs to gain electrons, there has to be some room available where it could keep those electrons. Now, fluorine is extremely electronegative. I mean, it's one of the most electronegative elements out there. So it's extremely electronegative. And lithium is one of the least electronegative elements. The one that is least electronegative is also referred to as electropositive. So it's a highly electropositive element. It wants to lose electrons. So what will happen is कि इसका जो one electron है, that would eventually get attracted by fluorine, and fluorine would end up gaining that specific electron. That's it. अच्छा, उसकी क्या reason है? Why would fluorine not gain the other two electrons? What's the reason for that? Anyone, any idea? सर क्योंकि मतलब ज्यादा शील्डिंग है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। नहीं, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, ये बाकी दो क्यों नहीं गेन किए लिथियम से? क्योंकि शेल्फ क्योंकि एक ही रिक्वायर्ड है। हाँ, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है और मतलब रखे कहाँ पे, ठीक है। प्लस लिथियम जो है वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को वीकली पुल कर रहा है। जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन है, दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, so they are going to be strongly attracted to it. So it would be harder for lithium to lose these two electrons. Transition metal के case में you can actually lose multiple electrons. You can also lose electrons from the inner shells, but not in the case of lithium. वो ionization energy में ना jump जो होगा ना, that would be very large. Like removing the first electron was easy, but removing the other two electrons was kind of difficult. और plus fluorine के पास जगह, हाँ जी सर ट्रांजिशन मेटल्स के केस में क्या होगा? उसमें होता है कि वो और भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। मतलब ट्रांजिशन मेटल है ना, जैसा अगर आयरन का एटम है ना, पता नहीं अगर उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो ये आ गया आयरन का एटम, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के केस में होता है कि जितना बड़ा एटम होता है ना, द बिगर द एटम, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज, क्यों नहीं खोल रहा, अच्छा, so what happens in transition metal cases, the bigger the atom, just एक सेकेंड, अच्छा, the bigger the atom, तो कोई और एटम आएगा वो उसके दो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। मतलब वो डिपेंड कर रहा है, वो जो अगला एलिमेंट है ना, दैट्स एक्टिंग एज द ऑक्साइजिंग एजेंट, उसकी पावर पे डिपेंड करता है, हाउ पावरफुली वुड इट बी एबल टू पुल दोस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो आयरन के केस में द आउटर टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो क्या बच जाता है Fe2+। अच्छा, लेकिन बिकॉज इट ऑलरेडी हैज सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका न्यूक्लियस बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी इतना स्ट्रांगली पुल नहीं कर रहा। तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर जो अगला एटम है ना, उसके पास पावर है, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टू पुल अनदर इलेक्ट्रॉन, तो आयरन could also lose an electron from the inner shell. So iron could become 3+ as well. Iron could become 4+ as well. It could go up till 6+ as well. तो आयरन की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, but it all depends on the other atom's power to pull electrons, ठीक है। ये आइडिया क्लियर है कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह ना, there would have been a more powerful element जिसके पास एबिलिटी होती टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो भी शायद वो खींच लेता, लेकिन देयर इज एक्चुअली नो एलिमेंट दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फ्लोरीन। इस बात क्लियर है? यस सर। जी सर, एल्यूमिनियम के केस में ऐसे नहीं होता क्योंकि वो मतलब इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करी होती है, इसीलिए। नहीं, एल्यूमिनियम के केस में कि आयरन के जी केस में? सर, एल्यूमिनियम मतलब वो कोवलेंट में काउंट हो जाता है ना इससे, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना नॉन मेटल की तरह। हाँ, वो उससे मतलब कंप्लीटली खींच नहीं पाता, लेकिन वो एल्यूमिनियम सिर्फ क्लोरीन के साथ है, उस पर मैं आता हूँ बाद में, ठीक है। वो है कि लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तब जाके ना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पुल कर लेगा, ठीक है। क्लियर है? So it's got to be a large difference in electronegativity. वो एल्यूमिनियम वाले केस पे आता हूँ मैं। अच्छा, so this is अभी तो मैं सिर्फ ionic bonds के ऊपर हूँ, ठीक है, अभी मैं और कहीं deviate नहीं कर रहा। So this is what an ionic bond is. You've got a metal and you've got a very large difference in electronegativity would happen when you have a metal plus a non-metal. But one of the elements would be from the left side, the other one would be from the right side.
So that is what an ionic bond is, and in ionic bond they form ionic lattices. तो इसका जो structure होगा, that's going to be lithium +1 would be attracted to fluorine -1 because oppositely charged ions. So there's going to be a force of attraction. In chemistry, there's always one force of attraction, and that's your electrostatic force of attraction. But lithium +1 will also attract other fluorine +1s to it. The other fluorine +1s will attract lithium with +1. And there's going to be an endless structure. Okay, from all directions, you will have lithium +1 attracting fluorine -1, fluorine -1 attracting lithium +1. And it will continue endlessly, which is why it's going to be a very giant structure. So, and it's going to continue, and this is known as a giant ionic lattice. सर जैसे NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं ना दोनों, मतलब वो भी, और ये भी तो लिथियम के भी वैसे ही होता है। शायद डिपेंड करता है, मतलब जो अरेंजमेंट है ना, दैट वेरीज फ्रॉम एटम टू एटम। द अरेंजमेंट मैं वो बताता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस यानी किस तरह वो अरेंज्ड है, इट डिपेंड्स अ लॉट on the size of the ions. Okay, how are they arranged? So it depends on the ionic radius and charge as well. मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ना, तो हो सकता है कि लिथियम का जो आयन है वो लेट्स से, although fluorine is smaller, नहीं fluorine is bigger actually, चेक करना पड़ेगा। मैं वैसे hypothetically speaking, lithium +1 could be smaller in size, fluorine -1 could be bigger in size, right? तो अब मसला क्या होगा, जब इन सारों को आपस में आप रखोगे तो ऊपर नीचे हैपहैज़र्ड हो जाएगा ना स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर? जी सर मतलब स्ट्रक्चर आपने कहा इसकी वजह से वेरी करता है। हाँ, वो जो लैटिस अरेंजमेंट है ना वो वेरी करता है, ठीक है। प्लस वो चार्जेस भी, जैसा ये NaCl का तो क्यूबिक है, मतलब NaCl का जो लैटिस है ना, दैट इज क्यूबिक। मैं किसी और का देख लेता हूँ कि लेट्स से किसकी पोटेशियम फ्लोराइड का जो लैटिस अरेंजमेंट, क्या वो भी क्यूबिक है कि नहीं है? मतलब ऑल्दो इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेशियम फ्लोराइड इज आल्सो, इसमें पता लग रहा है शायद। सर हाँ जी, नहीं, इट इज आल्सो क्यूबिक। सर आपने अरेंजमेंट्स की क्या बात की थी? मैंने वो कहा था कि ये सारे आयंस पैक्ड है ना, जैसा वो नहीं होता कि आप मार्बल्स हैं वो एक ग्लास के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि वन ऑफ द आयन इज स्मॉलर एंड द अदर आयन इज बिगर, राइट? तो वो जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हुई होगी ना। बात समझ आ रही है या सर, कि और पॉजिटिव, डिपेंड करता है आयनिक रेडियस और चार्ज के ऊपर। हाँ, और उनके रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपस में ना किस तरीके से पैक हुए हैं। वन ऑफ द अरेंजमेंट्स इज नोन एज अ क्यूबिक अरेंजमेंट। क्यूबिक अरेंजमेंट में ना वो सारे बिल्कुल ऑर्डरली होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, फिर नेगेटिव आयन, फिर पॉजिटिव आयन, फिर नेगेटिव आयन। लेकिन समटाइम्स वो थोड़ा सा ना, जैसा वो मार्बल्स अगर आप किसी उसमें ग्लास जार में डालो ना, वो हैपहैज़र्डली अरेंज होता है, तो मतलब उनकी अरेंजमेंट ना एग्जैक्टली उस तरह नहीं होती। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अरेंजमेंट जो होगी दैट वुड बी, तो मतलब जो NaCl होता है उसमें भी मतलब साइज में डिफरेंस तो होता होगा ना, जाहिर है हाँ NaCl है, हाँ ये का छोटा होता है Cl का बड़ा। हाँ, जैसा ये है ना, ये अब उसका दिया हुआ अरेंजमेंट ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब इसकी अरेंजमेंट देखो, इसकी क्यूबिक नहीं है, मतलब वो मेरे ख्याल से पता नहीं रेड वाला कौन सा, आई थिंक रेड वाले ऑक्सीजन है। तो एल्यूमिनियम आयन है, फिर ऑक्सीजन आयन है, तो वो ना है उसी तरह, इमेजिन उसी तरह करो कि देयर इज अ जार दैट्स फुल ऑफ बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, बिलियर्ड बॉल्स ही मार्बल्स के साथ वो फुल हुआ हुआ है, बट द अरेंजमेंट इज काइंड ऑफ हैपहैज़र्ड। समझ आई बात, क्यूबिक और इसमें क्या फर्क है? क्लियर है? जी सर। तो खैर वो डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो जो लैटिस जिस तरीके से वो अरेंज होंगे ना, दैट वुड डिपेंड ऑन द आयनिक रेडियस एंड आल्सो ऑन द
charge of the ion. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, anyway, so हाँ जी, होते सारे लेटेस्ट ही हैं क्या? सर, होते सारे लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, होते सारे lattice है, मतलब there's going to be a positive ion attached to a negative ion which is attached to a positive ion. बस वही चल रहा होगा, ठीक है? So it's going to be a lattice structure. It's going to be called a giant ionic lattice, ठीक है? And in the giant ionic lattice, positive ions attract. Positive ions and negative ions have an electrostatic. मतलब इसकी वो definition लिख लेते हैं. So it's a regular arrangement of positive and negative ions which have an strong electrostatic force of attraction known as an ionic bond. अच्छा, मुझे बताओ, what does this force depend? Some ionic lattices are very strong and some of them are very weak. ठीक है, so for example, you've got this ionic lattice. वैसे तुक्का लगाओ, is this ionic lattice going to be strong or weak? सर वीक होगा। और क्यों होगा? सर लाइक मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए शायद। नहीं, the whole force depends on the attraction between negative ions and positive ions, ठीक है? How much वो they ज्यादा नहीं हो अच्छा, तो अब वो attraction strength of ionic lattice, ठीक है? Remember, ionic lattices हैं कि your concrete is an ionic lattice, marble is an ionic lattice, ठीक है? These are all ionic lattices. They're very strong. Concrete, you make buildings out of it, so it's so strong. But then there are other ionic lattices like your table salt that is very, very weak. Some ionic lattices, they dissolve, they dissociate, their ions scatter in water very quickly, but others they don't. The strength of the ionic lattice, Joanna, that depends on a number of factors. Actually, two things. It depends basically on two things. One is, okay, if I have two elements, which one, like I have NaCl. So Na ions attracting Cl ions attracting Na plus 1, and so on. So that is an NaCl lattice. And I've got another lattice which is MgO. Mg is plus 2, O is minus 2. They attract each other. O minus 2 attracts another Mg plus 2. And Mg plus 2 attracts another O minus 2. अच्छा, इन दोनों में which one is stronger and why? क्या आंसर? MgO stronger. Reason क्या उसकी? What's the reason behind that? Why is Mg? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, simple attraction. मतलब strength of the lattice depends on कि how much does this O minus 2, ठीक है, ये आपके पास O minus 2 है, how strongly would it attract this Mg plus 2, ठीक है? So the attraction between the ions depends on the charge. If you have greater charge, there's going to be more attraction. मतलब +1 और -1 के बीच में the force of attraction is going to be lesser. +2 और -2 के बीच में the force of attraction is going to be a lot stronger. So remember this, that the force of attraction depends on number one. That's number one factor. That is the charge. Is that clear? ये सारा को clear है? Dua, Mahat, Yes, sir. Sidra, Safa, is this clear? सर Yes. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ, मतलब अगर +3 आयन है और दूसरा जो है वो -3 है, तो उनके बीच में there's going to be a lot more stronger attraction क्योंकि हायर चार्ज है ना। क्लियर है बात?
बस Yes, sir. सिंपल, अगर वो ओ लेवल्स फिजिक्स में पढ़ा था, स्टैटिक्स में पता नहीं क्या था, स्टैटिक्स था या क्या था, तो स्टैटिक चार्ज था। अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा और नेगेटिव ज्यादा होगा, there's going to be a lot more attraction, ठीक है। तो अगर if the positive charge is less and the negative charge is also less, there's going to be weaker attraction between them. So all these ions will not be attracting each other very strongly, but these ions would be attracting each other with a lot more force. So the first thing is, number one factor is higher charge, ठीक है, greater charge, that obviously translates to stronger attraction. ठीक है, क्लियर है, ये पहली चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑस्वाक क्लियर है? अच्छा, then Yes, sir. the second factor, is the size of the ion. जी सर, मैं भी यही पूछी थी कि साइज जो NaCl का साइज तो छोटा होगा ना MgO से। नहीं, MgO छोटा होगा, वो मैं साइज के ऊपर भी डिस्क्राइब भी करता हूँ। क्योंकि Cl के 3 शेल्स है, मतलब 288 होता है ना Cl-1, तो उसका तो एक पूरा शेल एक्स्ट्रा है, तो इसका जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, इन दोनों से बड़ा होगा। Mg is 2 shells, O is also 2 shells। क्लियर है बात? मतलब मैंने खाली जी Cl से देख लिया कि Cl का साइज बड़ा है। अच्छा, सेकेंड इज जी सर। साइज। हाँ, क्या क्वेश्चन जी है? सर, और तो Mg भी तो मतलब जाहिर है, मतलब उसका चार्ज भी ज्यादा है, तो इसीलिए भी वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, एक तो वो है, दूसरा साइज भी फैक्टर है ना। अच्छा, साइज ऑफ आयन में के स्मॉलर आयंस, अच्छा इमेजिन करो मार्बल मार्बल बॉल्स हैं, वो दे प्रेजेंट इन अ ग्लास जार। तो अगर छोटे मार्बल बॉल्स होंगे, दे वुड बी मोर टाइटली पैक्ड, ठीक है, दे वुड बी क्लोजर टू ईच अदर। सो स्मॉलर आयंस आर क्लोजर टू ईच अदर, यानी व्हेन दे form the lattice, they are going to be closer to each other, and they would be more tightly packed. So that would lead to more attraction as well. So you've got two main factors. One is higher charge, and the other one is the size of ion. Yani isko I'm going to write it as smaller ion. The smaller the ion, the greater the charge. It's going to be more. The ionic lattice formed would be a lot stronger. The ions would attract each other with a lot more force. Is this clear? Sir, हाँ जी। सर इसके और कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, बस यही तो है, मेनली यही तो है, ठीक है। तो based on this, you've got ionic lattices which are very strong, like concrete, like your marble. And based on the same reason, there could be ionic lattices that could be very weak, like your table salt. Okay? You can crush it with your hands, but you can't crush marble with your hands. You can't crush concrete with your hands. So that's one factor. And you can combine these two factors and you can call it charge density. Okay? There's a term that is frequently used, especially for ions. Now, this term is specifically for ions, okay? So charge density. You can combine the two factors. So charge density is directly proportional to the charge on the ion and inversely proportional to the size of the ion or the atomic or the ionic radius. ठीक है, तो ये inversely proportional था, smaller ion more attraction, यानी inversely proportional. Bigger ion less attraction. Higher charge, stronger attraction. That was directly proportional. So you can combine the two factors and call it charge density. So if I have two ions in front of you, so there's this ion which has a charge of +1, and there's this much smaller ion which has a charge of +3. So which one has more charge density and which one will form a stronger lattice?
किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? +3. ठीक है, +3. चार्ज डेंसिटी का लिटरली मतलब है कि ज्यादा चार्ज हो और बहुत छोटे से एरिया पे हो. ठीक है, सो has greater this one has greater charge density. सर हाँ जी. सर अगर ऐसा हुआ कि अगर एलिमेंट है उसके ज्यादा प्रोटॉन्स और उसी तरीके से उसके इतनी ज्यादा शेल्स है तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. आयन तो होता है कि ओवरऑल चार्ज होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिला के. आई डोंट केयर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है कितने प्रोटॉन्स है. बात समझ आइए? या सर. ठीक है. तो जब हम आयन की बात करते हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं ना एटम को, तो हम अंदर जाके तो नहीं देख रहे इसके पास कितने प्रोटॉन्स है कितने इलेक्ट्रॉन. हम तो ओवरऑल देख रहे हैं भाई इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है. ठीक है. अच्छा, तो एनीवेज, तो छोटा आयन जो होगा दैट वुड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. ये जो है ये दिस +3 वुड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. अच्छा, इसका सर जो एन हम्म सर एन जो है साइज में तो बड़ा है, लेकिन इस पे चार्ज कम है, तो फिर इसको कैसे बोलेंगे, मतलब स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? नहीं, हमेशा एक रिलेटिव कंपैरिजन होता है ना, कि मतलब व्हाट आर यू कंपेयरिंग इट विद. अब मुझे बताओ कि अगर आपसे ना क्वेश्चन में आया है, और ये क्वेश्चन में पूछेंगे भी वो, ठीक है, व्हाट इफ दे कंपेयर. इस पे हमें वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि A2 के अंदर इस पे ज्यादा डिटेल है. अभी तो बस बेसिक सा पता होना चाहिए. लेट्स से यू कंपेयर NaCl with KCl. अच्छा, अब दोनों बिल्कुल सिमिलर है. The charges are very similar. Na+1 Cl-1 K+1 Cl-1. But Na के मुकाबले में ना it's smaller in size. It's Na is 281, K is 288 and 1. तो मुझे बताओ कि which one is going to be a stronger lattice between the two? सर जिसका साइज छोटा है. ठीक है, तो रिमेम्बर ये दोनों फैक्टर्स हर दफा इन प्ले नहीं होते. जैसा यहाँ पे +1 - 1 यहाँ पे भी है, +1 - 1 यहाँ पे भी है. सो चार्ज इज नॉट अ फैक्टर. ठीक है, size of the ion is a factor. So this one is going to be stronger. And the reason for that is, why is it stronger? Because it's Na+1 is smaller than K+1. ठीक है, इज दिस क्लियर? और इसको मतलब ये हमने वैसे गैस किया, तो वी कैन ऑल्सो चेक. मतलब NaCl का ना मेल्टिंग पॉइंट अगर देखो तो, और अब यहाँ पे गलत ना हो जाए, किस मेल्टिंग पॉइंट से. अच्छा, NaCl stronger है 801. It's harder to melt NaCl. KCl is weaker. It's easier to melt KCl. ठीक है, तो हमारी बात ठीक थी कि it's NaCl is stronger. Is this clear? यस सर. Is one clear है? बाकियों clear है? सिद्रा, Osma, Reed, is this clear? या सर. अच्छा, तो खैर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है इसके ऊपर. बस रिमेंबर चार्ज डेंसिटी इज अ थिंग. ठीक है, जस्ट रिमेंबर if you have more charge on a smaller ion, so that means that ion is going to have a lot stronger attraction for other things, whatever they are. So greater charge on a smaller ion, which is why not all ionic compounds are equal. They have equal strength. Some of them are really, really strong. Now, two of the more popular ones, उनको ceramics कहते हैं. ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, बल्कि प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. ठीक है, property number 1, ionic compounds, they've got high melting and these are O levels. They've got high melting and boiling points. ठीक है, that's number 1. And they are strong. पहले तो high melting and boiling points. And the other one is that they are strong and they're also brittle at the same time. So they're strong as well as brittle. For example, concrete. I mean, it's very, very strong. I mean, you can make buildings out of it. Lekin just a tiny earthquake it's going to
I mean, it breaks down very easily. Brittle is that you apply a force beyond a certain point, the whole thing collapses, the whole structure collapses. Just like your table salt or like your marble. I mean, the marble tile on the floor can last for ages. But if you drop a marble tile and you apply a certain amount of force, it just breaks into tiny pieces. So it's strong as well as brittle. अच्छा, anyways, first high melting boiling point, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? So again, it's relatively speaking. So the melting and boiling points, just we saw KCl, right? So KCl had a melting point of 770, so that's pretty high. But then there would be stronger ionic lattice whose melting points would be as close to diamond, like MgO. It has a melting point of almost 3000 degrees centigrade. So that's very strong. That's so high melting point उसके lattice की strength पे depend करता है. So remember this, very strong lattices यानी greater charge smaller ion, ठीक है? So very strong lattices are often used as ceramics. Often used as ceramics. So what are ceramics? Ceramics are your really tough, really high melting point substances, really strong. Because a lot of things that you make, they have to operate in very extreme conditions. Like if you're sending a satellite to Venus, it has to face very high temperatures. You want materials, you're looking for materials that can withstand very high temperatures. So they're really strong and they've got high melting points, boiling points, and they're good insulators as well. Both from heat as well as they're going to protect you from electricity as well. So MgO is one of them. MgO, most of the furnaces that you make it from MgO. So the inside of the furnace linings, etc., are made from MgO. Aluminium oxide, on the other hand, is also a very strong ionic compound. Aluminium +3 hota hai, O -2 hota hai. So there's a very strong attraction between the ions. So this is used for electricity conduction, high voltage electricity conductions. तो आपके जो खंबे हैं ना, उनके ऊपर जो होल्डर्स लगे होते हैं ना for gripping the wire, and even the electricity box that you have inside, I mean, like at your gate, where there's high voltage coming in, those boxes are made from aluminium oxide. Because high voltage transmission, if you use any other insulator, it would burn up. Like if you use wood, it will burn up. Aluminium oxide, nothing would happen to it. It's very strong. So it's used for high voltage transmission to make stuff, to make like a transformer setting that's converting high voltage transmission. The body of the transformer will be made from aluminium oxide. You won't make it from a metal because the metal will melt. Aluminium oxide has a pretty high melting point, so it's not going to melt. तो एक तो ये हो गया high melting points and boiling points. Brittle का बता देता हूँ. Why are they brittle? The reason they're brittle is that they are very touchy about their arrangement. ये पिछला clear है सारा? अच्छा, अब there's this lattice. Now, why are they brittle? Okay, एक तो वो strong है. I mean, this Mg and O ions, etc., they're all attracted to each other very, very strongly. But the thing is, okay, as soon as you apply a certain force, the whole structure collapses. Why does it collapse? Like beyond a certain point, but there's other force apply करनी पड़ती है. It's not a simple force. You have to apply a pretty significant force to break a lattice. What will happen is, right now they're all attracting each other.
But if you were to apply a certain amount of force, what's going to happen is that even if the structure slides just a tiny bit, imagine the concrete structure that your house is made up of. So if it slides just a tiny bit, will there be attraction now? Okay, once the lattice gets disturbed, will there be attraction or will there be repulsion? Yes, sir, repulsion. क्योंकि वो दोनों oxygen ions जो है ना वो आमने सामने आ गए. The two oxygen ions are now next to each other, so they would start repelling each other. The magnesium ions would start repelling each other. तो वो cracks बनते हैं. मतलब concrete के अंदर ना अगर आप hammer करो ना उसे, yeah, even your walls that they're made out of plaster, which is an ionic compound. So if you hammer it, there's going to be a crack that's going to develop, and that crack would run throughout the structure. So जिस तरह glass टूटता है, उसी तरह ionic lattices, it's मतलब आपने hit उसको यहाँ पे किया था, but the crack would appear on the complete opposite side. Why? Because even a tinier disturbance in the structure, they're not going to, they won't be able to sustain that. ठीक है? So which is why they can be very strong. It's very hard to sort of move them. आपका जो concrete है उसको भी you can't, it's very hard to actually break it. But if you apply enough force and the lattice just gets disturbed a tiny bit, then the whole thing would collapse. ठीक है? Clear है? सर, हाँ जी. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये मतलब नॉर्मल अरेंजमेंट हो तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि अगर अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस आई तो फिर ब्रिटल हो जाएंगे. हाँ, फिर वो टूट जाएगा, पूरा collapse कर जाएगा स्ट्रक्चर. ठीक है? मार्बल की टाइल को अगर आप एक एंड पे मारो ना उसको तो वो पूरी टूट जाती है. ठीक है? तो लेकिन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इतने आराम से नहीं टूटेंगे. कुछ तो होते हैं वो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं. कंक्रीट है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंक्रीट पे भी अगर आपने हैमर अगर एक साइड से किया ना, वो क्रैक्स जो होंगे ना वो हर जगह पहुंच जाएंगे. ठीक है? क्लियर है? यस सर. चलो ठीक है, ये पहले तो ओवरव्यू कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो फिर उसके बाद फिर डिटेल में जाएंगे. चलिए ठीक है. ओके एवरीवन. सर मैं पूछ रही थी कि आपके वो जो यूट्यूब चैनल पे सर वो वाले रिडॉक्स का है, मोल्स वाले, होंगे सर मोल्स रिडॉक्स. प्लेलिस्ट पे जी सर वो मैं भेज देता हूँ, प्लेलिस्ट भेज देता हूँ. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. ओके लव. सर, हाँ जी. सर वो आपके पास जो रिडॉक्स वाले मोल्स के वो आप सेंड कर देंगे. मैं कर देता हूँ. और सर वो फ्राइडे वाला लेक्चर जो मोल्स का था वो भी मैं करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं कर देता हूँ. ठीक ओके सर, थैंक यू सर. है? ओके. अल्लाह हाफिज़.